Hello, Salam guys. This is me Basil, and today we are back with another banger tutorial. And as your tutorial, mein, we are going to be breaking down this scene from Iman Gadzhi's video. Latest नहीं है, पुरानी video है, but I like this scene और मैंने अभी recently एक client की video में भी create किया था. So I thought let's break it down for you guys. And yes, to show you how this works and how to create such scene. And yeah, so let's start the tutorial. So the first thing we have to do is just create a composition like this and अभी हम यहाँ पे जो है कोई background use नहीं करेंगे because उसके animation में कोई भी background नहीं था. Then there is an overlay only. So for now हम लोग जो है इसको ऐसे ही रखेंगे. Then we need a Instagram profiles screenshot. तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे Instagram खोल के जो है आपके सामने जो एक screenshot ले लेता हूँ quickly. Like search करते हैं हम यहाँ पे let's take a Alex or Muzi screenshot and then we can work on this one right here. So let me quickly take a screenshot, a long screenshot. We will take a screenshot till here. Let me quick open the snipping tool here and just simply take a screenshot. अच्छा हम यहाँ तक के स्क्रीनशॉट लेंगे सिर्फ और सिर्फ लाइक दैट ताकि हमारी ये एक जो पैनल है एक जो हमारा जो टेबल है वो कवर हो जाए. देन आई विल सेव दिस इन स्क्रीनशॉट टू माय फोल्डर. तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लेके इंपोर्ट कर लिया है एज यू कैन सी. अब यहाँ पे हम इसको करेंगे स्टार्ट एनिमेटिंग. तो टू एनिमेट दिस फर्स्ट इसको हम 3 बार डुप्लीकेट कर लेते हैं. फर्स्ट वी विल टर्न ऑफ दीस वंस एंड नाउ वी विल स्टार्ट कटिंग देम. लाइक हम सबसे पहले कट करेंगे लाइक दैट. हम स्टार्टिंग में सबसे पहले सिर्फ पिक्चर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लाइक दैट एंड वी जस्ट क्रिएट अ पैटर्न मार्क्स और मेक अ सर्कल. यहाँ से हम पिक्चर को लेंगे लाइक प्रोफाइल एंड like that, and we will mask it out, and then we will disable this and enable this marks this layer, and now we will mask this part here like that simply. And then we will simply mask it out, and then we will take a third screenshot. The third duplicate layer हम उसको जो है simply यहाँ से mask out कर लेंगे like that. शिट 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 इसको प्रेस करके आपने जो लेयर को सेलेक्ट करके ये सारी चीज़ें करनी है तो दैट यू कैन इजीली मास्क इट आउट. तो हमारे पास ये तीनों हो गए हैं एंड नाउ वी कैन एनिमेट देम. तो अच्छा अब हमारे थर्ड स्क्रीनशॉट है. यहाँ पे हमने एक और चीज़ करनी है. वी विल डुप्लीकेट दिस मल्टीपल टाइम्स सो दैट वी कैन क्रॉप दीज पिक्चर्स एज वेल. तो सबसे पहले हमारा एक और दफ़ा हो गया है एंड नाउ वी विल डिलीट द मार्क्स फ्रॉम हेयर and then we will one by one marks each of these pictures out like that. Let me delete the previous marks first. I guess हमारा दोबारा से marks हुआ इसमें like that. We will marks it out. क्योंकि हमारे एक एक करके हमें इसके marks करना होगा so that we can um so make a sort of swipe transition of these pictures as well. So first पे हो गया है and now we will do the same with the second one. Do the same with the second one, or we can maybe select these marks and put it forward like here and create for this and duplicate this again and create the same thing for this one like that. Do this way. तो हमारे पास first 3 pictures पे जो है marks आ चुका है and now what we are going to be doing is duplicate this again and simply delete the marks from here, and now we will marks it out like this from the second layer here like that. Again duplicate करेंगे हम इसे marks यहाँ से marks remove करेंगे and then we will again mark this picture out like that. And then we will again last time duplicate करेंगे and delete करेंगे इसका जो पहले marks है and then we will again marks this picture out like that. तो हमारे पास और ऑलमोस्ट सभी जो है मार्क्स हो गए हैं. सारे चीज़ों को हमने कट आउट कर लिया है as you can see here. बंद करता हूँ इन सबको and we have another screenshot here जिसपे हमारा मार्क्स नहीं लगा है. I guess this one, maybe not this one. ये वाले पे हमारा I guess मार्क्स नहीं लगा है. So we will delete this and we will enable all of them layers like that. And हमारे almost सारे pictures पे यहाँ पे marks लग चुका है. And now what we are going to be doing, अगर हमने यहाँ पे देखे तो हमारा एक जो marks था वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमारा ये वाला था part. तो हम इसको भी quickly जो है mask out कर लेंगे like that simply ताकि हमारा जो है ये वाला part भी आ जाए.
तो ओवरऑल हमने सब सारी लेयर्स को और सारे इसकी पूरी प्रोफाइल को कट आउट कर लिया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी सिंपली एनिमेटिंग ऑल ऑफ देम। सबसे पहले जितनी भी हमारी पिक्चर्स हैं एंड दिस लेयर, तो हमारी 3 थे आई गेस, तो I quickly move them here and we will keep with this, and now we are going to be animating this. So first of all, let me open a position keyframe here, and then we are going to be opening a opacity keyframe. Simply इन दोनों पे हमने keyframe लिया, इन दोनों को ये हमारे मेन keyframe है जो कि अभी इस पोजीशन पे है, इनको हम आगे करेंगे मूव, and then we are going to be selecting both of these layers and moving them down like this and reducing the opacity to 0 like that. Then हम इन सारे keyframes को select करेंगे and then we will press F9 to ease in them and simply open this graph editor and make the graph like this, like that. And now what we are going to be doing is doing the same thing with these as well. Actually सबको साथ कर लेना था to make the process easier, look easier for you guys, so I did that. So now what we are going to be doing, simply इन पे भी यही चीज करनी है, दोनों की frames लेंगे, opacity on position like that, and simply move all of these keyframes, select all of them, move them ahead and move them slightly downwards and reduce the opacity to 0. Then again select all of them, press F9, ease in them and give them this graph like that. And now you will see they all are coming up like this. And one more thing, we are going to be moving them upwards क्योंकि हमने ये वाला part cut कर लिया था. So we are going to be moving them upwards like that. Perfect. So as you can see हमारा ये animation start हो गया है. And now what we are going to be doing is moving them slightly ahead like that. हम इनमें थोड़ा थोड़ा gap दे देंगे like this, and then we will watch it to see if we get the same like that. एंड ईमान गाजी में थोड़ा सा फास्ट होता है. अच्छा, ये वाला जो हमारी लेयर है आई गेस, इसको हमने थर्ड पे रखना है यहाँ, एंड वी विल मूव ऑल ऑफ देम स्लाइटली लाइक दिस, लाइक दैट. अच्छा, हम ईमान गाजी में थोड़ा सा फास्ट था, तो वी विल ट्राई टू मेक देम कम फास्टर. उनको और क्लोजर मूव कर देंगे लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, सिंपली परफेक्ट. सो हमारे में काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया क्योंकि हमारा जो पोजीशन की फ्रेम है वो काफ़ी नीचे हमने ऐड किया हुआ है. तो वी कैन गो विथ दिस वन एज वेल, बट अगर आपको स्लो डाउन करना है, यू कैन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द पोजीशन हियर to according to your liking, but I guess that looks perfect as well. Now we will give them motion blur simply like that. Perfect. एंड हमारी एनिमेशन ऑलमोस्ट प्रोफाइल एनिमेशन डन हो चुकी है. एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग, अच्छा उसकी एनिमेशन में आपने देखा होगा कि देयर वाज अ पार्ट वेयर पिक्चर्स आती हैं एक साथ और एक ही फॉर्मेट में. तो हाउ कैन डू दिस टाइप ऑफ इफेक्ट. सो सबसे पहले इसको जो है हम करने के लिए हमें सिंपली करना ये होगा कि हमें या तो मास्क करना होगा एक पिक्चर को, और वी हैव अनदर वे विच इज स्लाइटली ईजियर देन दिस वन. सो हम उस वे में जाएंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसके लिए हमें सिंपली एक न्यू कॉम्पोजिशन बनानी होगी जो कि होगी 1080 by 1080 like that. And then what we are going to be doing is getting some pictures from Iman Gadzhi or anybody. हम किसी की भी पिक्चर्स यहाँ, यही वाली पिक्चर्स को हम यहाँ पे उठा लेते हैं like that. We will copy them and paste them here. And first of all इनमें से हम सारी जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी पोजिशन पी फ्रेम है उन सबको यहाँ से डिलीट कर लेंगे like that. And simply scale them on the screen. सबका जो है पोजीशन जो है सबके जो आई मीन सबको जो रीसेट कर लेंगे सबकी like that quickly. अच्छा, यहाँ पे हमारे की फ्रेम्स डिलीट नहीं हुए. We will first delete all of them like this. Please the opacity to 100. Then हम इन सारी पिक्चर्स को जो है वन बाय वन स्केल कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मास्क को आप लॉक कर देना. अगर आप मास्क को लॉक नहीं करें तो मास्क जो है मूव होगा. एंड वन बाय वन सबको जो स्केल अप कर लेंगे. अच्छा, अभी हमें एक और चीज़ यहाँ पे करनी है. अगर आपकी पिक्चर सही से स्केल अप नहीं हो रही है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग हियर इज सिंपली एडजस्टिंग द एंकर पॉइंट टू द सेंटर लाइक दैट. अब हम यहाँ पे इसको आराम से जो सेंटर में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं लाइक दिस. सो दिस इज अ ग्रेट वे टू एडजस्ट योर पिक्चर्स. सिंपली हम इसको जो है अपनी कॉम्पोजिशन के साथ अलाइन कर लेंगे परफेक्टली जहाँ हमें लगे. एंड देन वी आर गोइंग टू बी डूइंग द सेम थिंग with other pictures as well. Let me quickly move all of them above the first picture like that. And now ये वाली हमारी डन हो चुकी है. Now this one सिंपली इसका भी आपने सिंपली ये करना है. सबसे पहले इसको रीसेट करना है. इसका मास्क को यहाँ पे आके हम लॉक करेंगे एंड देन इसके एंकर पॉइंट को हम सेंटर करेंगे लाइक दैट. जस्ट क्लिक हियर एंड कम टू दिस पेन टूल, दैट पेन बिहाइंड टूल. क्लिक, होल्ड कंट्रोल एंड डबल क्लिक ऑन इट. तो आपका जो एंकर पॉइंट एज यू कैन सी, दोबारा करके दिखाता हूँ. अभी हमारा एंकर पॉइंट इस पिक्चर के यहाँ पे है, बट एस वी के विल क्लिक दिस आइकन हेयर
by holding control and then clicking this twice, हमारा जो है एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा. नाउ वी कैन स्केल इट प्रॉपर्ली लाइक दिस. परफेक्ट. अब इसको भी हम सिंपली अपना जो है सेंटर कर लेंगे लाइक दैट. अच्छा, हमारे पास पिक्चर्स वैसी नहीं है जैसे ईमान गाजी ने यूज़ की हुई है, बट वी विल गो विद दिस. तो हमारी ये दो पिक्चर्स हो गई हैं. नाउ वी विल गो डू द सेम विद द थर्ड वन हेयर. तो सिंपली इसको भी हम यही करेंगे. इसको भी हम सेंटर सेंटर में एंकर पॉइंट लेंगे लाइक दिस एंड देन वी विल अगेन स्केल इट अप लाइक दैट. इस हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे. अच्छा, हमारी पिक्चर्स थोड़ी सी दूसरे फॉर्मेट की हैं, सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे एक अच्छा लुक नहीं मिल रहा. बट अगर आपको एक प्रॉपर लुक चाहिए, लाइक प्रॉपर लुक अभी मैं बताऊंगा. इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स चाहिए होंगी जिनको हम आराम से जो है कट ऑफ कर लें. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू बी डूइंग द सेम विद द दिस पिक्चर हेयर. काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, बट अगेन इट्स ग्रेट टू डू दिस. सिंपली इसको स्केल अप कर लेंगे लाइक दैट. सेंटर में लेकर आएंगे, एंकर पॉइंट को अगेन हम सेंटर कर देंगे एंड लाइक दिस. And do want to do those with this image as well, these two images. Again come lock the mask if it's disturbing you, otherwise आपको ज़रूरी नहीं है यहाँ पे जो है मास्क को करने की. मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, so I will do this way. Please scale it up like that. LXY की पिक्चर को हम सेंटर में लाएंगे and then again do this with the last picture as well, जो कि हमारी नीचे वाली है. Again center point, anchor point at center में लाएंगे. We will lock the mask here and now scale it up simply like that. एलेक्स भाई की हमारे पास पिक्चर्स अच्छी नहीं है, उन्होंने पोस्टर डाली में सिर्फ. एक काम की चीज़ नहीं डालते ये. फिट प्रो स्केल अप. आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट क्या करें, अभी हमारे पास यही पिक्चर्स मिली हैं स्क्रीनशॉट में. सो या फाइनली हमारी वो एनिमेशन हो गई है. एंड नाउ वी विल गोइंग टू बी इनका साइज थोड़ा सा क्लोजर मूव करेंगे ताकि फास्ट हमारा जो एनिमेशन आए लाइक दैट. सिंपली काफ़ी फास्ट हो गया. आई गेस दैट्स परफेक्ट. एक काम करते हैं, इन सबको दोबारा डुप्लीकेट करते हैं एंड देन अगेन डू द सेम विथ हेयर ताकि हमारी ये लूप बन जाए अगेन. I guess that looks great. Again, we will do the same and we will paste all of them above them. You will see. Lol. This looks great. So yeah, now what we are going to be doing simply, हमने जो है after doing this, we are going to be adding this pictures, adding thing actually इस वाली composition को हमने simply open करना है जो कि composition 1 है. Simply drag and drop this on this composition like that, scale it down a bit like that, and you will see how the animation works here. Boom. So we got the animation here and now there's one more thing. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ईमान गाजी के एनिमेशन में उसका नीचे इसकी पिक्चर्स के नीचे उसका यूज़र नेम होता था. सिंपली वी आर गोइंग टू बी एडिंग द यूज़र नेम हेयर. एलेक्स हॉर्मूजी का क्या है, हॉर्मूजी. तो वी विल टाइप अ टेक्स्ट हेयर @हॉर्मूजी. फॉन्ट मुझे इंस्टाग्राम का गेस याद नहीं है कौन सा है, बट वी विल गो विद एनी फॉन्ट दैट वी लाइक हेयर. शिट. सेलेक्ट द टैग्स, चेंज इट टू आई गेस लेट्स गो विद पॉपिंस. आई गेस पॉपिंस वर्क करेगा. Pop-ins regular maybe. First of all, let me enable the fill here and make it gray. Instagram कैसे होता है, अभी फिलहाल हम इसको white ही रखते हैं. साइज तो कम करो, साइज कितना बड़ा हुआ है इसका बिला वजह. Like that. I don't know ये कैसा लग रहा है मूवी here. Let's go with this one. Change it to all caps from uh, lower caps like that. Size का कम करेंगे and we will place it here like that. Simply अब जो है हमारा ये भी ऐड हो गया है and now we will change the text color to slightly darkish like that and I guess that's perfect. So simply हमारा जब text हो जाएगा we will link this with the composition here. तो ताकि ये हमारी composition के साथ move हो सके. As you can see here हमारा text भी move हो रहा है. So finally all we have to do is make some final adjustments. As we can see here हमने सारी animations वगैरह almost कर ली हैं and now we have to do the final stuff. So let me quickly show you how you can do that as well. So guys, let's start doing our final adjustment. हमारा scene overall create हो चुका है and now if we play the actual scene here. I'll be honest, my main Instagram is just a stupid place where I post photos.
देन इस एक्चुअल सीन में सिंपली हमारे पास स्लाइटली ज़ूम है, जैसे ही ये वाली एनिमेशन खत्म होती है, एंड देन देयर इज़ अ स्लाइट ज़ूम हियर, एंड देन दीज़ एनिमेशंस ये वाली एनिमेशन पॉप अप होती है, एंड स्लाइट हल्का सा ज़ूम इसमें भी है। तो लेट मी क्विकली डू दैट एज़ वेल, एंड देन डू सम फाइनल एडजस्टमेंट्स एज़ वेल। सो क्विकली हमने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू all of them, pre-compose all of them like that, and now what we are going to be doing is adding a null object here, एंड सिंपली हम जो है नल ऑब्जेक्ट को लेंगे, एंड वी विल पेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स to the null object, link all of these composition to the null object like that. And now what we are going to be do, जैसे ये वाली एनिमेशन सारी पॉप अप होंगी, we will add a zoom from here like that. We will press S on the by selecting the null object, and then सिंपली हमारे पास ये स्केल का की फ्रेम इनेबल हो जाएगा। सिंपली इसको यहाँ पे एक की फ्रेम लेंगे, एंड देन वी विल मूव forward, and then we will zoom it like this, and we will again we will first move this one slightly downwards like this, simply like that, and then we are going to be decreasing the size of this slightly like this. Now हम लोग जो simply इन दोनों की frames को select करेंगे, and then we will ease in them and simply select this graph here, this keyframe, and make this graph like this, like that, simple. अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ से एज़ यू कैन सी यहाँ पे भी थोड़ा-सा ज़ूम आउट हो रहा होता है, एंड देन स्टार्ट होती है हमारा ज़ूम इन अगेन। हम सिंपली यहाँ से एक और की फ्रेम लेंगे ज़ूम इन करके लाइक दैट, एंड देन वी विल गिव दिस स्लाइटली ये वाला लाइक दिस, सिंपल लाइक दैट। थोड़ा-सा ये फास्ट हो रहा है, वी विल मेक दिस लाइक दिस एंड सी लाइक दैट। हमारा काफ़ी फास्ट है, तो वी विल ट्राई टू मेक दिस स्लाइटली स्लो। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। अगेन दिस लुक्स फास्ट लाइक दैट, सो इट लुक्स परफेक्ट। अब यहाँ पे कुछ फाइनल इफेक्ट्स हैं जो कि हम क्रिएट करेंगे। तो सिंपली हमारा ये वाला सीन डन हो चुका है, एंड नाउ हमने क्या करना है, सिंपली जैसे ही ये वाली एनिमेशन हमारी विजिबल होगी, हमने यहाँ से जो बैकग्राउंड है हमने वो स्लाइटली डार्क और ब्लैक कर देना है, एंड देन स्लाइटली ब्लर भी ऐड कर देंगे हम। सो लेट मी क्विकली टेक अ ब्लैक सॉलिड हेयर फर्स्ट, एंड टू क्रिएट दैट लुक सबसे पहले हम ब्लैक सॉलिड लेंगे, वी विल पुट दिस बिहाइंड दिस, and then we will slightly reduce its opacity to like that to give that kind of look, and then we will move it here। opacity में आके हम इसकी opacity को यहाँ से बढ़ाना शुरू करेंगे like that, and then यहाँ पे हम keyframe को करेंगे 0, and we will give this look। yep, perfect। तो जब हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा और मजीद opacity को बढ़ा के 80 कर देते हैं, and then we will change the text to slightly more grayish look like that। And another thing we can add is noise भी add करके देखते हैं। First of all, I will take a adjustment layer here and drop it above this below this black solid here, and then we will take a noise effect and see if that looks great। बाकी हम फाइनल इफेक्ट्स तो ऐड करते ही रहेंगे। Let me drag this down, increase it, let's see if we can move this above। काफी ज्यादा हो रहा है, we'll make it around 10%। अभी इतना विजिबल नहीं होगा, पर देखने में काफी लगेगा if you can zoom it। So you can see there are some dots and noise effect। So yeah, that looks great। And now I will do the same with this adjustment layer, put the opacity keyframe, or let's do this with the whole video like that। And now हमारा overall effect ready हो चुका है, and now let's add some final effects। To add those final effects, all you need to do is take a new adjustment layer, put CC vignette on it like that, and increase the amount, and let's play it। Let me increase this। So I guess that looks perfect। एंगल भी बढ़ा के देखते हैं now how it looks। तो हमने यहाँ पे विग्नेट भी ऐड कर लिया है, ज़्यादा विजिबल हमारा नहीं हो रहा बिकॉज देयर इज अ ब्लैक, पूरे में ब्लैक ही है ऑलमोस्ट हमारा सीन। तो हम इसके एंगल ऑफ व्यू के साथ थोड़ा सा प्ले करेंगे टू गेट समथिंग a great look। I guess that looks perfect। Then we will add a CC lens। So we will take another adjustment layer here and drop a CC lens effect here, ताकि थोड़ा सा इसको हम roundness वाला look दें like that। Perfect। As you can see, this looks perfect। थोड़ा सा हम इसका बढ़ाएंगे। perfect।
हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, we will increase the size. And now जो final effect है हमारा वो है posterize time. Simply add another adjustment layer here and drag and drop that one here as well. Slightly smooth तो क्या हम चाहेंगे थोड़ा सा like 18 to 12 पे टेस्ट करके देखते हैं, see if we get a good look here. I guess that looks better. 12 पे करते हैं and see how it looks at the motion blur 2s. Finally, guys, we have recreated this scene from Iman Gadzhi's animation, and this looks perfect. This looks perfect, as you can see. So this is how we can create this effect. And also हम इसको जो है सिर्फ Instagram के लिए नहीं, we can do this with YouTube, we can do this with Twitter, we can do this with LinkedIn, any platform. Like just you know the basics के कैसे होता है. So now we can do with any platforms we want. So this is how this animation is done. I hope you enjoy this tutorial and learn something new. So if you do, then make sure to give it a like and subscribe to get more videos like this in future. Inshallah, we are planning to post more tutorials and more content on this channel. So yeah, stay tuned and I will meet you in the next video. Till then, take care. Bye.